Let me start the okay. So let me start the class. Okay. ये आ गया अपना ये क्या बोलते हैं और दो लोग आ गए. तो अभी हम करेंगे Banach's closed range theorem. It's in the same vein जो हमने इससे पहले 2-3 रिजल्ट्स किए थे. इनफैक्ट हम उनको यूज भी करेंगे जो इससे पहले के 2 लेक्चर्स मान लो जो हमने किए हैं. Closed range theorem, where the statement is if X and Y are Banach spaces. Now completeness is important. Y are Banach spaces and T belongs to Bxy, that means it's a bounded linear operator from X to Y, then RT जो हमारा है range of T के लिए जो हम लिखते हैं RT यानी range of T is closed in Y if and only if ये अच्छा है if and only if range of T star is closed in X star. And you have to remember, let me just remind you, T is a bounded linear operator from X to Y. और जब मैं कह रहा हूँ range of T, it is actually the image of X under T inside Y. It would be contained inside Y. And similarly, then T star is a map from Y star to X star, defined by T star at Y star is equal to Y star composition T. ये हम बहुत बार कर चुके हैं. T star is the conjugate of T, and of course then range of T star is the image of Y star under T star, which is contained inside X star. Now we are seeing that this set would be closed in Y if and only if this set is closed inside X star. So that's our theorem. So let's start the proof. Now, one side is rather easy because suppose क्योंकि हम इसका एक हिस्सा वहां कर चुके हैं इससे पहले वाले थ्योरम में. Suppose range of T is closed in Y, then we know that ये हम कर चुके हैं कि range of T star is equal to kernel of T per. एक्चुअली हमने किया था ये कंटेन्ड होता है और इक्वालिटी तब होती है जो ना हमने सी पार्ट किया था, वो जिसके 4 पार्ट्स थे वो थ्योरम में. तो सी पार्ट कहता है अगर RT क्लोज्ड है तो ये इसके बराबर होगा. But this can be written, this is the same as intersection of all X star belonging to X star such that X star belongs to X star. Oh, मैंने गलत लिखा. Okay. It is intersection of all X star, all functionals that kill kernel, and it is equal to 0 for all X belonging to kernel of T. So this is it. So now what?
this is basically each of this is a closed set because it is basically inverse image. It's the, how do you put it? अगर मैं x को fix करता हूँ inside the kernel of t, so then this would be the inverse image of a closed set. Let me write it like this. You could think of it as x star inverse of नहीं, हमने x star को रन करना है, ऐसे सभी जो x को किल करते हैं, ऐसे सभी जो x मतलब कर्नल ऑफ t को किल करते हैं, it would be ठीक से लिखा राइट नहीं, ऑब्वियसली यही है, मैं इंटरसेक्शन क्यों लिया इसको, जस्ट मिनट चेक करता हूँ इसमें, मेरा मिस्टेक, हाँ कर्नल ऑफ टी का एनहाइलेटर हो गया, ऑल ऐसे वेक्टर्स, राइट, हाँ ठीक है. Now what I want to see, this is a closed set because it is inverse image of a singleton. So this is inverse image of a singleton, and since arbitrary intersection of closed sets is closed, therefore this is closed, which means that range of T star is closed. Actually converse is more involved, उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. Conversely, suppose that range of T star is closed in X star, जहाँ पे रहता है, and we have to show that range of T, and we have to show that range of T is closed in Y, right? ठीक है. What we do now, I take let y sub 1 be equal to range of T का closure. मैं इसका closure लेता हूँ और मैं दिखाऊंगा, eventually I will show that range of T का जो closure है वो range of T के बराबर है. If a set is equal to its closure, तो उसका मतलब वो closed होगा. So that's what we are going to follow. Now define a map T1 from X to this Y1. Of course, this is contained inside Y, we know that. Y1 पे हमने define किया map by T1 of X is the same as T of X. Of course, T of X is defined for all X. T is a map from X to Y. But हम इसको range जो हम दोनों की same रख रहे हैं, T की भी और T1 की भी. Actually, it is essentially the same map. लेकिन अब हम जो कोडोमेन है उसको Y1 रख रहे हैं बजाय Y के. रेंज ऑफ T के लिमिट पॉइंट्स को भी उसमें शामिल कर रहे हैं, और हम ये इसलिए कर रहे हैं, मतलब वो आगे जब हम प्रूव करेंगे तो पता चल जाएगा. So I have defined this way, so which would mean thus range of T1 is the same as range of T. ये जो है is dense in Y1, right? range of T जो है उसका closure है ना Y1, so by definition Y1 is range of T का closure. So therefore under this अगर मैंने इस तरह से define किया, range of T is dense in Y1, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. So range of T is dense in Y1, so that एक और हमने किया था, अगर range of something is dense,
then जो उसका adjoint है that is 1 1. तो ये हमने B part में किया था. The range of T1 is dense, then P1 star, which can be defined a map from Y1 star to X star, because T1 is a map from X to Y1. तो इसका उल्टा हो जाएगा. तो हमने किया था कि अगर रेंज ऑफ T1 डेंस है या रेंज ऑफ T डेंस है तो ये जो मैप होता है ये 1 to 1 होता है. ये पार्ट बी में था शायद. नाउ वी क्लेम दैट, हम क्या करना चाहते हैं, range of T1 star is equal to range of T star. Now you have to remember T star is a map from Y to X star, and T1 star is a map from Y1 star to X star. Of course, they lie in the same set, but we are saying that they are the same subsets of X star. Okay. Now let Y1 belong to Y1 star belong to this Y1 star by Hahn-Banach theorem. Hahn-Banach theorem, I can extend it to the whole space. Basically, इसमें Hahn-Banach theorem ही है main चीज. There exists Y star belonging to this Y star. You have to remember that Y1 जो है, it is contained in, it is range of T closed, of course that is contained inside Y. So it's a subspace, essentially a closed subspace, because it is closure of something. Range of a linear operator is always a subspace. जब मैं इसको ये लगाता हूँ, so it's a closed subspace. So there would exist a functional which would essentially extend it, right? The whole space. So such that Y star, when extension का मतलब ये है, when restricted to this Y1 would be the same as Y1 star. Thus, for every X belonging to X, if I want to evaluate T star, Y star at X, and you have to remember that T star at Y star belongs to X star, so it's a functional on X, which is the same thing as Y star at T of X, which is the same thing as, लेकिन जो TX है, it belongs to range of T1, है ना? So therefore Y star would be the same as Y1 star. Extend, when we restrict it to the range, it becomes Y1. So चाहे तो हम लिख सकते हैं TX जो है वो belong करता है range of T में, जो कि contained है Y1 में. Okay, which can be written as Y1 star at T1 of X, because they're essentially the same. That's how we define T1 of X. T1 of X is exactly defined as T of X. So that would be using again the definition of conjugate. So it would be T1 star, Y1 star evaluated at X for all X belonging to X. So the action same hai, which means that T star at Y star is equal to T1 star at Y1 star. तो जो मैं चाहता था, मैंने Y star Y1 star लिया था Y1 में, तो मैंने देखा इसका जो क्या बोलते हैं image है under T1 star, it is the same as the image of T star at Y star. तो कहने का मतलब ये हुआ, it would imply that range of T1 star must be contained in range of T star. और converse भी बिल्कुल ऐसे ही है, again using the same idea. On the other hand, if Y star belongs to the full space Y star and it's defined for all of Y, then I can restrict it. तो अगर मैं Y1 star को कहूँ Y star restricted to Y1, right?
then it would belong to y1 star. मैंने मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर मैं इसको एक सब स्पेस पे restrict करता हूँ, it would still be a linear map, it would still be a continuous map. So it would belong to y1 star. And again, using the same thing, same argument as above, t star at y star is the same thing as t1 star at y1 star. कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो हमने as above उसी से हमें मिलेगा. Showing that, which would imply showing that range of t star is also contained in range of t1 star. Hence, by both these, range of t star should be equal to range of t1 star. Once I have done that, it implies that thus range of t1 star जो है अब चूंकि हमने माना है रेंज ऑफ हमारा जो assumption है range of t star is closed. अब अगर इसके बराबर है उसका मतलब range of t1 star is a closed subspace of Banach space X star. And hence a Banach space, because it's a normal linear space, because it's a subspace. Range of a linear map is a subspace. दूसरा, a closed subset of a metric spaces of a complete metric space is a complete metric space when you take that subspace topology. तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि ये closed subspace है, subspace तो है ही, तो ये normal linear space भी होगी, closed से ये भी Banach space होगी. Hence a Banach space. Now, T1 star is a map from Y1 star to a range of T1 star. अगर मैं इसको restrict करूं, now this is a Banach space. A dual is always Banach complete. So ये है जो हमने prove किया था, और हमारी assumption that RT star is closed is a continuous and bijective, क्योंकि हम ये भी कह चुके हैं by a previous result that T star T1 star जो है वो 1-to-1 है. अगर ये 1-to-1 है, ऑन तो है ही, बिकॉज खाली मैं रेंज ले रहा हूँ, राइट. तो इट्स अ कंटिन्यूअस बाइजेक्शन, एंड ऑफ कोर्स लीनियर तो है ही. मैं लिखता हूँ लीनियर कंटिन्यूअस बाइजेक्शन between Banach spaces, therefore it must be a homeomorphism. Hence T1 star is a homeomorphism, यानी ये दूसरे साइड से भी कंटिन्यूअस होगा. That would be by open mapping theorem basically. In particular, it is bounded below. In particular, it is bounded below because it's an open map. It is bounded below. Hence, by previous theorem, जो हमने किया था इससे पहले, hence by previous theorem. अब एग्जाम में तुम previous theorem नहीं लिखोगे, यहाँ तुम उसको state करो, statement दोगे उसको previous theorem. If it is bounded below, then इसका जो adjoint है वो surjective होना चाहिए. यानी T1 from X to 1, Y1 should be surjective. ये previous theorem से हमने किया, उसकी statement यहाँ तुम लिखोगे एग्जाम में. और अगर ये सर्जेक्टिव है तो मतलब क्या है, उसका मतलब वो रेंज ऑफ T1 is equal to Y1, the whole of Y1. बट रेंज ऑफ T जो है वो रेंज ऑफ T1 के बराबर है by our definition of T1. Therefore रेंज ऑफ T1 जो कि बराबर है Y1 के, which is actually equal to range of T का क्लोजर, जो मैं कह रहा था, क्योंकि ये अपने क्लोजर के बराबर है. So therefore range of T1, therefore range of T, मैं क्या कर रहा हूँ, range of T, तो range of T जो है
है ना, range of t1 is equal to y1, range of t is equal to range of t1, therefore range of t is equal to y1, which is range of t का closure, therefore r of t is closed. और मैं बार बार कहता हूँ कि तुम इसको थोड़ा घर पे पढ़ लिया करो और फिर मुझसे कुछ पूछा करो जहाँ पे कोई, जो कि तुम नहीं करते। अब मैं मान सकता हूँ ऊपर से ये भी है कि तुम कहोगे लॉकडाउन है वगैरह वगैरह वगैरह, सो वो भी सम एक्सटेंट जेन्युइन रीजन है इस टाइम। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं भी होता तब भी तुम कुछ ऐसा ही कहते। ओके, कैमरा जरा ऑन करो सभी। सो गए क्या? देखो जो कैमरा इस टाइम ऑन नहीं करेगा ना, मैं एब्सेंट लगा दूंगा। यस सर। क्योंकि मुझे लगेगा वो सो रहा है। तो रोल नंबर 18 एब्सेंट, 20 एब्सेंट, 11 एब्सेंट, 17 एब्सेंट, 10 एब्सेंट, 6 एब्सेंट, 4 एब्सेंट, 2 एब्सेंट। और दूसरे कौन है? ओके, 31 एब्सेंट, 19 एब्सेंट। तो ये सब स्टूडेंट्स एब्सेंट है क्योंकि मुझे लग रहा है सो रहे हैं। 19 तो कैमरा ऑन करो ना, जाग गए तुम? अरे ऑन करो कैमरा, ऐसा क्या है? हाँ मुझे बता दो कहीं पे कोई दिक्कत, क्योंकि पता है क्या हुआ, दूसरा यूनिट हमारा बहुत छोटा है, एक्चुअली वो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन तीसरा चौथा बहुत बड़ा है। अब सिलेबस ऐसा ही है, मैंने उनको बोला था ये छोटा है, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, नहीं माना तो, लेकिन अब जो भी है यही है। तो इसके बाद हमें थोड़ा बिल्कुल अलग टॉपिक करना है, दैट इज एलपी स्पेसेस, डुअल्स ऑफ, मतलब डुअल्स ऑफ दोज स्पेसेस। कहाँ गया सिलेबस? तो उसके लिए मैं फॉलो करूंगा इस बुक को, प्रिंसिपल्स ऑफ रियल एनालिसिस बाय एल प्रेंटिस एंड बर्किनशॉ। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिलती है ऑनलाइन, अगर तुम पढ़ोगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ रियल एनालिसिस उसको हम फॉलो करेंगे। और तुमने मेजर थ्योरी का पढ़ा है ना पुराना, या लिबिक इंटीग्रेशन, उसको भी रिवाइज करोगे, ठीक है? एंड आई वांट टू टेक सम क्वेश्चंस, क्योंकि थर्ड और फोर्थ हमारा काफी बड़ा यूनिट है एक्चुअली, और पता नहीं ये दूसरा इतना छोटा क्यों रखा है। मैं देख रहा था इसमें कुछ और है, लेकिन है नहीं। जो हमें करना था वो सारा हो गया। 4-5 थ्योरम्स थे वो हमने किए। सो अच्छा, एनी क्वेश्चन? अब कभी तो कुछ तुम्हारे दिमाग में सवाल आता होगा पढ़ते पढ़ते। अरे कितने हो तुम? 26 हो इस टाइम। 26 में से एक में भी एक क्वेश्चन नहीं आ सकता? तो हम इसको कंटिन्यू करते। अब मुझे अच्छा नहीं लगता ये ऐसे ही जाना। मैं चाहता हूँ यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो तुम पूछ सकते थे प्रैक्टिस में। और अभी हमारा एलपी स्पेसेस, बिग एलपी स्पेसेस, जिसके बारे में तुम्हें पता होगा। सो शुड आई गो टू दैट, कि तुम इस जो हमने पढ़ा इसके बारे में कुछ पूछोगे? हाँ, तुम में से कोई नोट्स बना रहा है? अच्छे से नोट्स बना रहा है? किसी बुक से पढ़ रहा है? बाय द वे, तुम्हें अगर ये लगता है ना कि ये जो सर बुक से, हाँ गुड, हाँ बोलो। सर जो आप पढ़ाते हैं ना, तो ये मतलब ढूंढना पड़ता है कि इस बुक से क्या मिलेगा, वो उसमें ही पूछा आधा करो ना, मुझसे मेरे साथ साथ बता भी। जैसे मैंने अभी बोला ना एलपी स्पेसिस में उससे पढ़ाऊंगा, या जब मैंने पढ़ाया था वो C0 इज सर कॉम्प्लीमेंट्री। इसके लिए ना वो इनफिनाइट डायमेंशनल वो वाली बुक, एनालिसिस तो नहीं, मैं कल, उससे हमें यस कुछ सर, मैं एक्चुअली अभी उससे हमने कुछ नहीं पढ़ा फ्रैंकली। वो आगे वाला कोई पोर्शन है जो हम उससे पढ़ेंगे। मैंने उस दिन बताई थी सारी किताबें जिसमें ये आएगा। जैसे मैंने बोला था C0 इज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड इन एल इन्फिनिटी, उसके बहुत सारे प्रूफ्स है, लेकिन मैंने कहा था ये वाला वो फेबियन का है, फेबियन की बुक है बनक स्पेस थ्योरी, उसमें है। तो इसलिए मैं साथ साथ बता देता हूँ
ताकि तुम अगर चाहो तो उसको देख लो। और क्या, इन्फिनिट डायमेंशन एनालिसिस में शायद हम आएंगे आगे जब हम डुअल्स की बात करेंगे। डुअल कंस्ट्रक्शन एक लंबा चौड़ा वो टॉपिक है हमारा। तो एलपी का जो डुअल है पी टू पावर इंटीग्रेबल फंक्शंस, तो वो तो खैर अभी हम शुरू करने वाले हैं। हाँ, मैं चाहता था, मैं ये कह रहा था बेसिकली कि तुम मतलब उसको पढ़ के कुछ तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ना, कुछ क्वेश्चन। तुम पढ़ते भी हो कि नहीं, कि यस लेक्चर सर। में ज्यादा टाइम लग जाता है? नो सर, मैंने 5-6 बुक्स की डाउनलोड इसके लिए, तो मुझे ढूंढने में ही टाइम लगता है कौन सा टॉपिक किस बुक से मिलेगा, तो वो प्रॉब्लम भी होती है। चलो दैट्स गुड, कोई एफर्ट तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है, ठीक है ना। सर अगर आप साथ साथ में ही बोलेंगे ये टॉपिक किस बुक से मिलेगा तो उससे मैं बता आसान रहा हूँ, मैं होगा। साथ साथ बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था, जो हान-बानाक थ्योरम के अराउंड जो थ्योरम्स है ना, वो हर एक यस फंक्शन सर। एनालिसिस की बुक में मिलेंगे ही मिलेंगे, डिटरमाइज्ड हो या कोई और हो। कोई भी फंक्शन एनालिसिस की बुक हान-बानाक थ्योरम के जो वो डिफरेंट वैरायटीज है वो तो उसमें आ ही यस जाएंगे। सर। तो लेकिन जो जो कुछ अलग टॉपिक होता है, तो जैसे चूंकि इसने अच्छे से किया है ये मेजरेबल इंटीग्रेबिलिटी फंक्शंस जो है ना, ये एलिफेंट एंड बर्किंशॉ है, तो इसलिए इसी में आता है। और आगे हमें कुछ और करना है रिगार्डिंग सम टोपोलॉजिकल थिंग्स, तो उसके लिए वो जरा हमने उसका लिया है, क्या बोलते हैं, इनफिनिट डायमेंशन एनालिसिस बाय एलिफेंट्स एंड बॉर्डर। ओके, सो शुड आई कंटिन्यू विद एलपी स्पेसेस? यस सर। ओके, तो एलपी स्पेसेस में तुम्हें मैं रिमाइंड करूं कुछ चीजें। लेट मी टेक अनदर पेज। By LP spaces, LP over some interval, you know this L stands for Lebesgue integral. So अगर मैं लेता हूँ over this AB, जो कि हमें बुक्स में मैंने देखा LP AB ही उन्होंने किया है, so this in this our case would be all functions that are from AB to R, और चूंकि dual construction is, तो हम usually R वैल्यू ही लेंगे, लेकिन ज्यादातर मतलब डेफिनेशन कुड बी वेरी जनरल, यानी यू कुड हैव इसकी जगह, चलो मैं वह लिख देता हूँ। F मेजरेबल है, एंड यू नो मेजरेबल, व्हाट्स मेजरेबल फंक्शन, एंड मॉड ऑफ रेज्ड पावर P जो है इज इंटीग्रेबल, दिस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, Lebesgue इंटीग्रेबल बाय दिस, आई मीन चलो मुझे लिखना चाहिए Lebesgue इंटीग्रेबल, क्योंकि L है ना, Lebesgue इंटीग्रेबल। By that we can meaningfully talk of this FP d mu. अब क्योंकि ये A B होना जरूरी नहीं है, it could be any set which has a measure defined on it, which has a collection of sets that we can measure, we can call measurable sets. Now it could be LP E, अब फिर से वही होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर मैं E लिखूंगा, है ना, जब मैं वो इंटीग्रल इवैल्यूएट करूंगा, तो ये होगा F from E to R, यही डेफिनेशन है। अब E पे एक ही condition है, it must be a measure space, it must have a measure defined on it, and measure defined होगा on a collection of subsets that we call measurable sets, which is a sigma algebra, but it could be, at least it must be a semi-ring. So you must have some here E with a sigma algebra here and a measure defined on it, and then we say F is measurable if inverse image, in this case inverse image of open sets is belongs here. It's just like जैसे टोपोलॉजी में है एक कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, अब वो कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है, वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल स्पेस पे। इसी तरह से जो हम मेजरेबल सेट्स यहाँ डिफाइन करते हैं, फॉर्म अ सिग्मा अलजेब्रा, दैट मींस दे आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट एंड आर्बिट्ररी यूनियन, नहीं काउंटेबल यूनियन, नॉट आर्बिट्ररी। सो वो कलेक्शन ऑफ सेट्स जो होगा, अगर इनवर्स इमेज ओपन सेट्स की वही है, it is contained in that collection,
then we say f is a measurable function. और integrability के लिए तो खैर तुमने पूरा सारा कोर्स किया है, तो अब मैं कहता कि this is Lebesgue integrable, लेकिन उसके लिए तो you just construct the Lebesgue measure from simple functions, है ना, from characteristic functions to simple functions to their limits in some sense, and finally you arrive at the definition of an integrable function. So now once I have defined it, then this collection does form a vector space. A vector space का मतलब क्या है? It must have a scalar multiplication and addition. वो तो usual है. So पहली बात तो ये है कि if f is measurable, it's a measurable functions form a space, a function space. Then of course alpha f is also measurable. And of course alpha f जो p है, क्योंकि ये पॉइंट वाइज है सारा मामला, it would be just alpha raised power p. और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, चूंकि कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन में, सो ऑफ कोर्स स्केलर मल्टीपल जो है, अगर f बिलोंग्स टू lp, और यूजुअली हम कभी कभी म्यू लिखते हैं, अगर तुम किसी बुक में ऐसे लिखो जैसे एल अप्रेंटिस ने लिखा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, मतलब यही है, इफ द सेट इज क्लियर कि हम किस सेट पे डिफाइन कर रहे हैं, तो सेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। कभी हम मेजर की इंपॉर्टेंस ज्यादा आती है तो हम मेजर यहाँ लिख देते हैं, कभी सेट की होती है तो उसका लिख देते हैं, एंड बट ये भी सही है, ये भी सही है। सो इफ L belongs to LP mu or LP over AP, देन अल्फा एफ जो है वो भी ऑटोमेटिकली बिलोंग करेगा LP AP में, क्योंकि सिलेबस में ऐसे लिखा है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। एंड जो एडिशन का है, वेल दैट्स वेरी सिंपल अगेन, बिकॉज मॉड ऑफ ए जो है फॉर एनी p पॉजिटिव, modulus of a is equal to modulus of a raised power p whole raised power 1 by p, which would be less than or equal to modulus of a plus p plus modulus of b raised to power p whole raised power 1 by p, because pth root is an increasing function. मेरे कहने का मतलब है ये, चूंकि अंदर का भाई जो है इन दो से लेस होगा या बराबर होगा, then for all real numbers this is true. Similarly I can say mod of b जो है, that is also less than or equal to same thing. Now this is true for all real numbers, and you have to remember my range is real. So उसका मतलब वो mod of a plus mod of b would be less than or equal to twice mod of a plus p mod of b raised to power p whole raised power 1 by p, which would imply that mod of a plus mod of b raised to power p for a positive p would be less than or equal to 2 raised power p into mod of a raised power p plus mod of b raised power p. Oh, sorry. Now consider f g belonging to LP, whatever AP, तो उसका मतलब fx gx real number ही होंगे ना, because f is a function from AB to R, so I can say that f of x plus g of x जो है in mod raised to power p would be less than or equal to 2 raised to power p into f of x raised to power p plus g of x raised to power p, right? So हो गया है फैसला। तो we know that there is a result. पहले तो ये है कि अगर f measurable है तो mod of f raised to power p भी measurable होगा for p positive, तो ये functions measurable हैं और इनका sum भी measurable है, because sum of two measurable functions is measurable. It means that ये जो function है which is non-negative, it is less than equal to ultimately, you know, it's less than equal to this and it is non-negative. So 0 is a measurable function, this is a measurable function. Of course this f mod of x plus gx is a measurable function.
So what I'm trying to say, this thing is a measurable function and it is sandwiched between two Lebesgue integrable functions, therefore this would be Lebesgue integrable. तो इसके Lebesgue integrable होने का मतलब ये है कि अगर दो functions, हाँ नहीं मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया, थोड़ा सा स्लाइड, तो यहाँ पे ओ मैंने थोड़ा सा ये होना चाहिए था mod of a plus b, है ना, because mod of a plus b is less than equal to this, तो ये actually सही है, पता नहीं. So that would mean बजाय इसके, sorry, इसको मैं हटा सकता हूँ, मतलब mod बाहर है क्योंकि मुझे दिखाना है ये. So this is non-negative, so this is sandwiched between two Lebesgue integrable functions and the function is measurable because this is measurable, sum of two measurable functions is measurable, उसका mod measurable होता है, उसका p to power भी measurable होता है for a positive p. So it's a measurable function जो अंदर बैठी है और इसका p to power integrable है by a theorem which says that measurable function sandwiched between two Lebesgue integrable functions is Lebesgue integrable function. So this is an Lebesgue integrable function. So what does that mean? अगर ये दो Lebesgue integrable functions हैं, तो ये भी Lebesgue integrable functions हैं, because then it would be sandwiched between two Lebesgue integrable functions. है ना? Because this is Lebesgue integrable. Because मैं कह रहा हूँ FG both LP में belong करते हैं, तो इसका मतलब mod